हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अनिकेत। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे WWE 2K16 गेम को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे। आप सब गूगल पर सर्च करेंगे WWE 2K16 फॉर एंड्रॉयड फ्री डाउनलोड, और जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे। इस डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। आप सब इनमें से किसी भी सर्वे को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे इस गेम को अनइंस्टॉल करते हैं और प्ले करते हैं। तो इस गेम को प्ले करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। उसका नाम PPSSPP गोल्ड एमुलेटर है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे इस गेम को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप सब अपना फाइल ओपन करेंगे और जहां पर आप इस गेम को डाउनलोड किए हैं वहां पर जाकर उस डाटा पर क्लिक करेंगे। वहां पर एक एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। आप जहां पर इस गेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहां पर कर लीजिएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे इस प्ले करते हैं। The following tag team contest is scheduled for one fall on the way to the ring, accompanied by Xavier Woods, the WWE Tag Team Champions, Big E, and Kofi Kingston, the New Day. The combination of these two competitors looks nearly unstoppable. Only in WWE are you going to get action like we're about to see in this one.
Lucha Dragons. And both of these teams are determined to walk away with a win. Something's got to give. The WWE Universe on its feet, looking forward to this great match. Both legal men are in the ring and set to start things off here. We're ready to go. Not today, too fast. If his back wasn't hurt before, it certainly is now. And it's going to be hurting for a while. Big E with the excellent move to get out. Hey, Sin Cara, no problem getting out of that one. Oh, look at the emotion. Well, the topic of Big E here, tell us your thoughts. Well, if him and his partner can pick up this win, they'll be unquestionably red hot in the rankings. Oh, what a shot! We've seen plenty of high flyers over the years, Cole. And after watching Sin Cara for a few years now, I'd have to say that he belongs among the elite class of WWE high flyers. I mean, he's just so amazing to watch. And he gets leveled. This kind of offense he's known for. Yeah, you're right about that. He's made a name for himself with this. Here's the cover. These guys are giving it their all here tonight, not just to entertain the fans, but to ultimately walk away with the win.